spouse and his descendants नीचे वाले, बस उसमें उसके अलावा बाकी और कोई भी नहीं है रिलेटिव की डेफिनेशन में। तो हम काफी बार रिलेटिव की डेफिनेशन 48(2)B के लिए एक्सपैंड कर देते हैं, 56 वाली डेफिनेशन ले आते हैं जो काफी सारी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती है 56 वाली, बट ऐसा इसमें नहीं है। 48(2)B में रिलेटिव की डेफिनेशन के लिए आपको सेक्शन 2 देखना होगा जहां रिलेटिव डिफाइंड है। Then 43(B deals with payments of government dues etc which have been done after 31st of March but before filing of return, तो उसका डिसअलाउंस है, वो आपको मेंशन करना है। सेक्शन 56 में कोई ऐसी इनकम तो नहीं आ रही जो सेक्शन 56 में टैक्सेबल है, कोई ऐसी रिसीट तो नहीं है जो सेक्शन 56 में टैक्सेबल है, वो आपको देखना है। So all these things you, when you are doing the vouching of the auditees accounts, when you are doing the balance sheet finalization, scrutiny of ledgers, at that point of time you as the article over there can figure out these transactions and mention it in your working paper so that they can be appropriately mentioned in the tax audit report in form 3CD at the appropriate places. So ये आपका दायित्व है as students of chartered accountancy, that you have to mention these particulars correctly in the tax audit report in form 3CD. ऐसे ही loans की entry के बारे में 269 SS, 269 TT etc. And then definitely with TDS, the important informations as to on what amount the TDS has been deducted, on what amount TDS has not been deducted, all those things have to be mentioned over here. Then the institute has clearly stated that when you are doing the tax audit, then adherence to accounting standards is necessary and mandatory even in case of proprietary and partnership firms, meaning thereby that accounting standards जो हम company law के लिए applicable करते हैं AS वाले, वो यहाँ पर भी applicable होंगे when it is a tax audit for even in a case of a proprietary concern or in a case of a partnership firm. यहाँ मैं students को ये बताना चाहूँगा कि accounting standards institute ने prescribe किए हुए हैं जो Companies Act ने as it is माने हुए हैं. Then there are another set of accounting standards which are called Income Computation Disclosure Standards, which is ICDS. वो that is specifically for income tax purposes. In my presentation in the later half, I will show you कि उसकी applicability कहाँ है when we will discuss Form 3CD. So please see that accounting standards are clearly followed by the entity whose accounts you are auditing, and their proper disclosure is mentioned in the notes on accounts or in the balance sheet or profit and loss account as is required by law and as is required by that particular accounting standard. Then we move on to certain issues which are there. As madam had requested me to take up the issues, so the issues are there in tax audit also. Like आजकल you as students of chartered accountancy are also very much eager and have many students have invested in shares, mutual funds, and now also in cryptocurrency. So एक बहुत बड़ा डिलीमा है कि डे ट्रेडर स्पेक्युलेटर को हम बिजनेस इनकम मानेंगे कि कैपिटल गेन इनकम मानेंगे, उसमें हम टर्नओवर कैसे निकालेंगे, हम उसमें अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एंड देन फाइनली उसकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे. So any doubts are there in the minds of the students, if they can share with me right now? So turnover regarding doubts and the tax audit regarding doubts, when we will have the tax audit in case of speculation. When we will be having tax audit regarding speculation. Yes, sir. So Jwalji, what do we mean by speculation?
First of all, आपने एक term use करी speculation. So we have to understand as to what do we mean by the term speculation in context of Income Tax Act first of all. है ना? So कोई बता सकेगा speculation Income Tax Act में कहाँ defined है और उसका क्या मतलब है? I think students have joined the seminar in good numbers, so they should be able to say something. Who is this Redmi? Please name yourself. Redmi has raised his hand. Yes. Yashika Sachdeva. इनको आप unmute कर दीजिएगा. She wants to say something. Yes, I have already done. Yes, you can. Hello. Yes, Yashika. Yes, I'm audible, ma'am. Yes, yes. First of all, sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So the question is, where is speculative business is defined in Income Tax Act? So in PGBP, speculation is defined, and speculation business is defined in PGB under PGBP. Yes. Yeah, and speculation means mostly where we earn income in trading, where we do intraday, where we sell or purchase shares on a single day. That income comes under the speculative income. But the problem is when we fill form 3CB, 3CD, then we don't know how to show that income or turnover, and where we will show that in the form. Sure. Yashika, you have raised a good question, and you have tried to answer what is speculative business and what speculative is there. So to be more precise, speculative transactions are defined in the Income Tax Act in section 43(5), explanation 5 to section 43, right? So which says that where delivery of good is not taking place, then we would say it to be a speculative transaction. Yes, sir. जहाँ पे किसी गुड्स की डिलीवरी नहीं हो रही, तो उसको हम एक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मानते हैं. बट उसमें उन्होंने एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, which are as the securities as mentioned in the Securities Contract Act, then it would not be speculative transaction. You rightly said, I said that जहां डे ट्रेडिंग हो रही है, जॉबिंग जिसको बोलते हैं कि आपने शेयर खरीदा, शेयर बेचा, वहां उसको कैसे हम दिखाएंगे? So moving back, first I would like to state to you that first of all we have to decide for the assessee whether share trading is business income or capital gains income. तो सबसे पहले sir. हाँ बोलिए. Hello. Yes. Actually, I read guidance note of ICI, and they have mentioned specifically that delivery, futures, options comes under PGPP, and intraday income comes under the speculative income, which yes, that's all I want to say. Yes. Hello. Yes, you are right. You are right. वो speculative में आ जाएगा. But I am first going a step back and saying that first of all you have to decide कि जो income share से हो रही है SSE की, वो क्या capital gain income है कि business income है? Because speculative transaction. हाँ, बताइए. Sir, actually last year I handled one client
So most of the clients in lockdown deals in share business. So we will decide upon based upon the number of transactions they entered. Like I handle one client where he have 5 or 6 members in his family, and he do trading from all the accounts through shares, and their turnover is like 2 or 3 crores for each member. In that case, I entered that transaction in PGPT. And in other cases where they entered into small transactions, like number of transactions is less, and we will enter that transaction in capital gain. Yes, you have a right. You have taken a right approach. This is what only I wanted to share with the students. You have rightly shared with the students that when the volume of transactions is very high. See, for this, we need to have the guidance, and even the guidance note says that the Central Board of Direct Taxes, see, nowhere in Income Tax Act, it is defined कि हम उसको business कब मानेंगे और capital gain कब मानेंगे. अगर इतना क्लियर कट डिफाइंड होता तो आई थिंक आज हम लोग इस पे बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे होते. Exactly, sir. That's the main problem I was facing last year, because I read all the guidance note or material from where I can find that how to show that income. But first problem comes in front of me, that what will consider as a turnover, because how I can decide that I will put it that in a tax audit. सीबीडीटी, हाँ, आपने सीबीडीटी का सर्कुलर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखिए आजकल प्रॉब्लम क्या है, हमारे जमाने में व्हेन वी डिड आवर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तब कंप्यूटर नहीं था और गूगल अंकल नहीं थे. आज आप लोगों के संग परेशानी क्या है कि यू हैव होर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट सही इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको पिक करने के लिए दिमाग चाहिए. अपने को यूज करना है, आपको दिमाग को यूज करना है. आप सब में अच्छा दिमाग है, बट आप लोग उसको यूज नहीं करते हो करेक्ट मैनर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, गूगल करके आप कुछ भी चीज आप लोगों से पूछो तो आप लोग गूगल करके चीज निकाल के दे देते हो कि सब गूगल में ये दिया हुआ है. अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ. फर्स्ट, सबसे पहले आप सेक्शंस पढ़िएगा कि कैपिटल गेन के सेक्शन क्या हैं और बिजनेस इनकम के क्या हैं, कैपिटल एसेट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड क्या है. इसके लिए फिर आपको गाइडेंस मिलती है. इनकम टैक्स का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, सीबीडीटी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला. सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला 1989 में. देन दे ब्रॉट आउट अ सर्कुलर इन 2007, and then they again brought out a notification in 2016. अगर हम 2007 वाला सर्कुलर देखें, आई थिंक सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2007, if I'm not mistaken, उसने डिफाइन करने की कोशिश करी गई कि असेसिंग ऑफिसर कब किस ट्रांजैक्शंस को बिजनेस माने, शेयर ट्रांजैक्शन को बिजनेस माने, और कब उनको कैपिटल गेन या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माने. उन्होंने उसमें 15 पॉइंट्स दिए उस सर्कुलर के अंदर. उन्होंने कहा कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा हैं, उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या बोरोड कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, क्या शेयर ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और बिजनेस भी है उसका कि नहीं है, क्या सारा मेन फोकस उसका शेयर ट्रांजैक्शंस पर है. ऐसे करके उन्होंने 15 पॉइंट्स असेसिंग ऑफिसर को के लिए दिए कि इन 15 पॉइंट्स की मदद से वो एक ट्रांजैक्शन को या किसी एसएससी के अकाउंट्स को देख के ये समझे कि वेदर दे आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस और कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी कोई आपके पास ऑडिट करने पे कोई भी एसएससी आता है शेयर ट्रांजैक्शन करके, बिकॉज आजकल सभी लोग, काफी लोग शेयर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं. So, and especially with special thanks to the annual information statement AIS, जहाँ पे वो सारी information is now readily available, जो पहले client करता था but आपको दिखाता नहीं था. So now with AIS, when the information is available, first of all you have to see how many transactions, मतलब उसकी कोई और business income या कोई और source of earning है कि नहीं है. सबसे पहले आपको ये देखना है. अगर उसकी कोई और source of earning है, so then we can say that it can go in
कैपिटल गेन्स चैप्टर ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो सकती है। उसके सोर्स ऑफ फंड क्या है, जो पैसा उसने शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटी में, शेयर एक्टिविटी में लगाया है, उसका सोर्स क्या है, वो खुद का पैसा है कि उसने बोरो करके लोन लेके किसी से लगाया हुआ है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है। Then the circular even says, rather the notification of 2016 even says that the assessee can have two type of activities. One can be business activity and the other, dealing in shares, can be trading can be investment activity. उन्होंने यहाँ तक बोला कि assessee की दो activities हो सकती हैं। Then the third and more important कि आजकल वो future options में काम कर रहा है, कि वो जॉबिंग कर रहा है, कि वो शेयर की डिलीवरी लेके थोड़े दिनों के बाद बेच रहा है उसको। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ बाय यू। नाउ वंस यू से दैट इट इज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द असेसी, देन यू हैव टू शो it under the head of profit and gains from business of profession, PGBP जो आपने हेड बोला उसके अंदर आपको दिखाना है। once you say that these are share trading activity of the assessee। अब उसके अंदर एक चैलेंज आता है सबसे बड़ा आपके पास कि उसमें आप टर्नओवर क्या दिखाएं, उसकी आप अकाउंटिंग कैसे करें। सो अगर आप फ्यूचर के बारे में जानते हैं, आई थिंक लॉट्स ऑफ यू वुड बी doing or carrying out also future and options and will be knowing about futures also, how the future trading takes place on the stock exchange. So stock exchange में जब future trading होती है, there you buy a commitment of a share which you can buy even because आप सेबी ने अलाउ कर दिया कि अगर आपने फ्यूचर, अगर आपने एक्सपायरी डेट के ऊपर उस फ्यूचर को नहीं सेल किया या नहीं पोजीशन क्लियर करी, then that would be delivered to you, right? So that means you are making a commitment to the exchange that yes, you are buying these number of shares maybe in the future or what, and then options और कोई call put option है वो अलग issue है। So future के अंदर the guidance note, as I have mentioned in my slide at para 5.14 para A, have said that how you have to compute the turnover in futures. It specifically says that futures में जो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस उस ट्रांजैक्शन का है वो आपका टर्नओवर होगा। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, लॉट के अंदर आप शेयर खरीदते हैं। से इफ यू वांट टू बाय वन लॉट ऑफ रिलायंस शेयर्स, सो रिलायंस के फ्यूचर की क्वांटिटी है 250 शेयर्स एंड आज सपोज रिलायंस का रेट 2000 रुपए है, तो 250 into 2000 would be say 5 lakh of rupees. So you buy one lot of Reliance shares for 5 lakh of rupees, right? So the turnover there is not 5 lakh of rupees, but the turnover would be जो आपने suppose 2000 में शेयर खरीदा है एक लॉट और उसको आपने 3000 रुपए में बेच दिया, you earned a profit of 1000 rupees and multiplied by 250 rupees, that means जो 2,50,000 आपका प्रॉफिट आया वो आपका प्रॉफिट हो गया उस ट्रांजैक्शन पे। सो दैट 2,50,000 is your turnover for the purpose of future trading. When the assessee is doing trading in futures, then the turnover would be 2,50,000 and not 5 lakh of rupees, which is the total amount of lot which he has bought. Why? Because जो आपने 5 लाख का लॉट खरीदा है रिलायंस का शेयर्स का, उसका पेमेंट नहीं करते कभी भी एक्सचेंज को, ना उसका कमिटमेंट करते, उसका एक मार्जिन मनी होता है जो आप एक्सचेंज में देते हैं, ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज को देते हैं, दैट इज ऑल। सो दैट इज व्हाई द गाइडेंस नोट हैज क्लियरली स्पेल्ड आउट एंड सेड दैट फॉर फ्यूचर्स द अमाउंट ऑफ प्रीमियम व्हिच यू हैव अर्नड is only to be treated as turnover and only the absolute values of it has to be sum total to come at the turnover figure, meaning thereby कि आज आपने रिलायंस खरीदा जिसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कल आपने रिलायंस का फ्यूचर बेचा जिसमें आपको 50,000 का लॉस हो गया, फिर परसों आपने खरीदा उसमें 25,000 का प्रॉफिट हो गया, so the total turnover would be 1,75,000 and not 75,000. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इस पूरे ट्रांजैक्शन 3 ट्रांजैक्शन में आपको 75,000 का हुआ, बट आपने जो 50,000 का लॉस किया
उसको आप रिड्यूस नहीं करेंगे टर्नओवर के लिए, बट टर्नओवर आपका 1,75,000 हो जाएगा और प्रॉफिट उसमें आप 75,000 कमाएंगे, राइट? सो फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्म 3CD, रादर 3CD में कहीं टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली फॉर अकाउंटिंग रेशियोज रिक्वायरमेंट है. That is why the turnover for futures would be just the difference which you have earned in absolute figures. That means without reducing the loss from there. शेयर जब आप खरीदते बेचते हैं, शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली टर्नओवर आपका सेल्स माना जाएगा. जो भी सेल्स आपने करी है दैट वुड बी योर टर्नओवर. ऑप्शन के अंदर जो प्रीमियम आप अर्न कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, वो प्रीमियम आपका टर्नओवर का पार्ट हो जाएगा. जॉबिंग के अंदर जो आपका डिफरेंस आपने दिन में कमाया वो आपका टर्नओवर का पार्ट होगा, नॉट द होल अमाउंट ऑफ शेयर्स यू हैव बॉट एंड सोल्ड फॉर जॉबिंग पर्पस. उसमें केवल जो आपका डिफरेंस होएगा वो आएगा. सो आई थिंक आई एम क्लियर एज टू व्हाट टर्नओवर वुड बी इन अ शेयर बिजनेस and how the turnover has to be calculated in a share business, which is also defined in the or explained in the guidance note. But for the benefit of the students, I have tried to explain to you in very simple terms as to how turnover in share trading has to be determined once we say that it is a trading activity. Right? Any question anyone has up till here? No, sir. Good. So that means I am able to explain my viewpoint. Yashika has a question. Yeah, Yashika has a question. Yes, Yashika. Please unmute Yashika. Yes, Hello. unmute yourself. Yes. Yes, Yes, Yashika, Hello. you are audible. Yeah. So, is that turnover is for calculating the limits of tax audit purpose, or we can show that turnover in our P&L account if we are showing that income as from income from business or profession? See, Ashika, for the turnover which I have stated to you is for both purposes, for the purpose of calculating the turnover and also for the purpose of profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रिलायंस का एक लॉट आपने 2,000 रुपए के हिसाब से खरीदा, सो योर टर्नओवर वुड नॉट बी 5 लाख ऑफ रुपीज. योर टर्नओवर वुड बी ओनली द प्रॉफिट व्हिच यू हैव अर्नड आउट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. इन द एग्जांपल व्हिच आई गिव टू यू वाज 1 लाख ऑफ रुपीज, राइट? So turnover would only be the Yes. amount of difference which you have earned in that profit, in that transaction of future. That only has to be shown as turnover for both, for calculating the limits of threshold limit of 1 crore, 2 crores or 10 crores, and also for showing it in the profit and loss account. अमूमन ये देखा गया है, काफी बार ये देखा गया है, आर्टिकल्स प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टर्नओवर जो टोटल अमाउंट है 5 लाख रुपए in case of that case, what will be the turnover? प्लीज कम अगेन. दोबारा क्वेश्चन बोलिए अपना. Sir, in case of delivery where we hold shares for some time, in that case, what will be considered as turnover? इन In डिलीवरी, case of delivery, हाँ, डिलीवरी के अंदर टर्नओवर आपकी टोटल सेल प्रोसीड्स होएगी, बिकॉज वहां आप उसका पेमेंट कर रहे हैं. डिलीवरी में अगर आपने आज शेयर खरीद लिया और कल बेचा, so then that share is transferred in your name, right? Once it is transferred in your Yes, name, sir. you have to make the entire payment. चाहे वो आपने अपने शेयर ट्रेडिंग अकाउंट से किया हो या कहीं से किया हो, so that amount will be shown as your turnover. आपको एक और मैं रास्ता बताता हूं, इसमें फॉर्म 10D भी आता था, अब वो शायद जुलाई 2021 से 22 से अमेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है रूल्स में से. ब्रोकर का जो सर्टिफिकेट होता था, एक्सचेंज का सर्टिफिकेट होता था बेसिकली. सो फॉर्म 10DB में आपको ये मिल जाता था कि टर्नओवर क्या है, सेल परचेज उसने कितने अमाउंट की करी हुई है.
So Yes. from there, you used to cross verify the Yes. amount of sale purchase shown by the assessee, right? Now, moving Yes, sir, forward, right. yes, moving forward, in case of builders, even the advances received form part of turnover, because for the definition, for the purpose of section 44 AB, it says turnover or gross receipts of business. So when advances are received, then those form part of turnover for the purpose of calculating the limits under 4480. Someone has raised the hands. If they can ask the question, unmute yourself and ask the question. Yashika, do you have any query? Redmi, another one with the Redmi username. Actually, I'll move on. So for builders also, the turnover is even including the advances which they have received. Why it is considered in that manner? Because builders के case के अंदर, where you are using percentage completion method, and where as per the I would say not the guidance note which has been issued in 2012 for accounting for real estate transactions, it also says that the builders have to follow percentage completion method, and there the turnover is not the amount of registries done, sales done. It is based on the percentage which are derived, and from there the revenues derived. So that is why in case of builders also it is a bit tricky as to how the turnover has to be computed. In case of charitable institutions where the business turnover exceeds 1 crore of rupees, then definitely they also have to have their accounts audited under tax audit for tax audit purposes. आजकल काफी सारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस इनकम कर रही हैं. See, mind first of all, I've used the term business turnover exceeds 1 crore of rupees. अगर किसी चैरिटेबल एंटिटी में डोनेशन आ रहा है 1 करोड़ से ऊपर और कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा, उसका टैक्स ऑडिट नहीं होना. मेरा एक सवाल आप सबसे, स्कूल है, उसके अंदर बच्चों से जो फीस आती है वो 3 करोड़ रुपए की है, क्या उसका टैक्स ऑडिट होएगा या नहीं होएगा? बताइए, anyone will answer it? Someone has to answer it. Please answer. Anyone? Yashika and Redmi, any one of you? Yeah. It's a simple question कि अगर किसी स्कूल में फीस जो आ रही है वो 3 करोड़ रुपए फीस आती है स्कूल में, तो क्या उसका टैक्स ऑडिट होएगा कि नहीं होएगा, which is registered under section 12AA. Hello. Yes, you are audible. Yeah, sir. So, as per section 1023, 1023(3) AB, AC, if I am not wrong, then up to rupees 10 crores, they are not eligible. Like they are not there is no need to for them for tax audit if their fee receipt from specifically fee receipt is up to rupees 3 crore. The limit is 10 crores now. Like if fee receipts is up to 10 crores, they are not there is no need for them for tax audit. I'll modify my question. फीस receipts 12 करोड़ हैं तो क्या होगा? Sir, टैक्स ऑडिट होगा कि नहीं? बोलिए बोलिए, you are trying to answer the question.
आप औरों से बहुत अच्छी हैं जो एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, बोलिए। Okay, thank you, sir. Sir, if their purpose is for charitable purpose, then I think they are not come under tax audit, because specifically religious, charitable, yoga are specifically come, like these are the object. If these are the objective, then they are not come under tax audit. I'm not sure, but No, fine, but does anyone have a different answer to that? What Yashika, what Yashika has said? किसी के पास कोई different answer है? Yes, sir. बोलिए। Redmi, please tell us your name. मैं विनीत गोयल। Sorry. विनीत गोयल। Okay, okay, Vinit. Please rename it. Huh? Ask your question. Okay. मैम, hello. Yes, you are audible. बोलिए, बोलिए। Sir, actually, my question is that, sir, in charitable case में जो भी हमारा टर्नओवर होता है, सर अगर up to 5 crore रुपीज है तो सर ये exempt income होती है हमारी। बट एग्जम्पशन हमें तभी मिलेगी यदि हमने टैक्स ऑडिट कराया होगा, तो इस केस में हमें टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगा। Okay, you have a difference of opinion than Yashika, right? अब इसके अलावा किसी और को कुछ कहना है? नहीं. So I'll just explain to you. First of all, I use the word charitable institutions, meaning thereby that they are registered under section 12AA, right? Yes, sir. So when an institution is registered under section 12AA, then that is a charitable institution. आप लोगों ने थोड़ा सा confusion किया अपने दिमाग में. Yashika said that 1023C3ABACAD जहां भी उसने बोला, there she said the turnover is 10 crore of rupees. I would like to clarify that the turnover or the amount of income receipts, rather the gross receipts of an institutional educational institution, if they are below 5 crore of rupees, 5 crore है वहां पर limit, Yes, sir. then Exempt income है। it will get deduction or it will get exemption under section 1023C 3AD, right? अगर उसकी 5 करोड़ से नीचे की रिसीट्स है तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी वहां पे, तब है। बट इट डज नॉट मीन कि वो बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम तब होगी बिकॉज दैट इज द रिसीट विच इट इज अर्निंग फ्रॉम द चैरिटेबल एक्टिविटी, and charitable activity is defined in section 2 subsection 15, which includes education, right? So running a school, running a college would be educational activity and charitable activity per se, and so tax audit would not be required because that is not your business activity. सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई charitable entity कोई बिजनेस कर रही है। अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी स्कूल रन कर रही है तो देन दैट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज चैरिटेबल एक्टिविटी। अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी सपोज स्कूल के साथ साथ सपोज पेट्रोल पंप रन कर रही है, सपोज मेडिकल शॉप रन कर रही है, कुछ और चीज कर रही है, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. But running a school per se is only purely a charitable activity. So it is not business. Since it is not business, तो वहाँ टर्नओवर की कोई कहीं बात नहीं होगी. एंड जो मिस्टर गोयल ने कहा कि 5 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ से नीचे है, बिजनेस इनकम मानी जाएगी और टैक्स आउट करना जरूरी है तभी एग्जम्पशन मिलेगी. That is a wrong statement which was done by him, which was made by him. So I would like to correct him that he at least had the guts to speak out what was there in his mind. And I think इस वेबिनार का पर्पस भी वही है कि जो आपके डाउट्स हों उनको मैं क्लियर और क्लैरिफाई कर सकूं, ठीक है ना. So there the charitable activity business has to be seen first कि क्या कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है. अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है और उस बिजनेस एक्टिविटी का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है,
तब उसको टैक्स ऑडिट अपना कराना होगा उस बिजनेस एंटिटी का। चैरिटेबल एंटिटी के अंडर बिजनेस हो रहा है और एक उस चैरिटेबल एंटिटी के अंदर आप डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव कर रहे हो, तो जो डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन वाला बुक ऑफ अकाउंट है उसका ऑडिट नहीं होएगा, बट जो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस रन कर रहा है, उस यूनिट का ही केवल टैक्स ऑडिट होएगा। दैट इज व्हाट द पर्पस इज ओवर हियर, राइट? एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Sir, thank you so much for clarification. Welcome. I think moving forward, the concept of turnover would include GST. So there is Have I one made a very- right statement or a wrong statement? Sir, we have a query from Ishika Saxena in the chat. Sir, we are facing difficulty while preparing capital gain returns. When will this topic begin? Okay. कैपिटल गेन्स रिटर्न्स के अंदर मैं भी आपको भी बताता हूँ 5 मिनट में वंस आई थिंक दिस टॉपिक शुड स्टार्ट आफ्टर एटलीस्ट हाफ एन आवर, because after half an hour only I'll be going to the return portion, and then I think I'll be taking up that how capital gains have to be worked out in share transactions, right? So moving forward, turnover, whether GST would be included in turnover or not. No, sir. उज्जवल जी नोट कर रहे हैं और नो सर कह रहे हैं, वेरी नाइस। किसी और का इससे कुछ और भिन्न उत्तर है? Does anyone have a separate answer from what Ujjwal ji has said? Or everyone agrees that turnover के लिए GST include नहीं होएगा? Understand, you might have read section 145 capital A. एक इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन 145 कैपिटल ए. What does it say? It says that for the purpose of sales, for the purpose of purchases, for the purpose of valuation of closing stock, the goods and services have to be valued and taken care of after, and rather adjusting them for the duties, taxes paid, and then they have to be accounted for. इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट था एक्साइज ड्यूटी के अंदर कि हम इंक्लूसिव मेथड एक्साइज ड्यूटी फॉलो करेंगे, एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करेंगे. तो अब एक्साइज ड्यूटी तो रही नहीं जुलाई 17 से, तो नाउ आई कैन से कि वो जीएसटी मान लिया जाए उसको. सो फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर जीएसटी हैज टू बी इंक्लूडेड, and then only you have to work out the turnover, because otherwise 145A gets defeated. It becomes crucial when your turnover is say around 95 lakh of rupees without GST, और GST आपने सेपरेट अकाउंट के थ्रू रूट कर रखा है, और अगर हम GST कलेक्टेड का फिगर लेते हैं एंड से यू आर एट 18%, सो वो करीब 17 लाख रुपए आता है. तो 95 plus 17 will give you a figure of 112, and when it is 112, then yes, definitely tax audit is required, right? Because अगर आप टैक्स ऑडिट जब करते हैं तो आप वहाँ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म 3CD के अंदर आप बोलते हैं deviation in the method of accounting employed as compared as provided in section 145A. So there you say, many times you say कि there is no deviation and nothing is reported over there, but we have to understand as to what 145A specifically speaks of. It speaks of that sales purchases के अंदर आपको सारे taxes और जो भी खर्चा इंकर किया है in bringing the goods to the present location and state, जिस कंडीशन में गुड्स हैं उसको लाने में जो भी आपने खर्चा किया है, all that has to be included, meaning thereby carriage inward है वो भी इंक्लूड करनी है परचेजेस के अंदर.
सेल्स में अगर आप FOR क्लाइंट के डेस्टिनेशन पे दे रहे हैं तो वो फ्रेट भी इंक्लूड करनी है, बिकॉज GST भी आपसे कहता है कि अगर आप इनवॉइस पे फ्रेट चार्ज कर रहे हैं सेपरेटली तो उस पर GST लगाएंगे, राइट? एंड GST लगेगी जो गुड्स वाली GST होगी, उस परसेंटेज की GST लगेगी. सो फॉर टर्नओवर GST ऑल्सो हैज टू बी इंक्लूडेड. नाउ प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस हैं, किसी के 3-4 प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस हैं, तो उसमें टर्नओवर हर एक का जोड़कर आपको टोटल करके फिर टर्नओवर लेना है. ये नहीं कि आप अलग अलग प्रोप्राइटरशिप फर्म्स का अलग अलग बिजनेस टर्नओवर मान के उसको कर लें. When to use 3CA and 3CB I have already discussed with you कि कब हमें 3CA यूज करना है और कब 3CB यूज करना है. Moving forward, Sakshi ji, I have made out the form 3CD. If you like, I can have the detailed discussion about the major provisions of 3CD, or if you like, I can then switch over to the other slides, which basically are on ITR. अगर आपको 3CD पे चाहिए कि हम clause wise discuss कर लें, if the majority of students says so, then yes, I can discuss it clause wise also. But if you say कि नहीं हमको आता है, इसको हम आगे skip करना चाहते हैं, तो then it is your choice. Sakshi ji, what should be done? सर मैं स्टूडेंट से ही रिक्वेस्ट करूंगी एक बार मेजॉरिटी बता दे, अगर उन्हें 3CD का डिटेल डिस्कशन चाहिए तो इट्स ओके, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. उज्जवल, व्हाट डू यू थिंक? मैम कर लेते हैं डिस्कशन. यू वांट इट? यस मैम, वी कैन हैव द डिस्कशन. और मैम एक क्वेरी और आई है चैट बॉक्स में. सर TCS is also included. Whether TCS is also included? See, TCS is not part of turnover. TCS is never part of turnover. So TCS would not be included for calculating the turnover limits. Sir, students are saying yes, sir, for the to share the details. I'll now I think I've shared the screen of form 3CD. It is visible to all of you? Yes, sir, it is visible. Right. So form 3CD, name of the assessee, I think it's very simple, but here एक twist है. प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर जनरली देखा गया है कि जो आप नाम लिख रहे हैं वो काफी बार गलत लिख रहे हैं. Here you have to see कि आप ऑडिट किसका कर रहे हैं. क्या आप ऑडिट उसकी प्रोप्राइटरी फर्म का कर रहे हैं कि आप ऑडिट उस इंडिविजुअल का कर रहे हैं. जनरली जो आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स आती हैं वो प्रोप्राइटरी कंसर्न की आती हैं. So you have to mention the name of the assessee as XYZ, proprietor of XYZ, and then the proprietary concern's name should come. The proprietor's name should come. So first the trade name has to come, right? Because you are doing the audit of the entity, not of the assessee over here who's a particular individual. Because उसकी कुछ individual incomes हो सकती हैं, कुछ individual investments हो सकते हैं जो उसने उस proprietary concern के accounts के through route नहीं किया हुआ, which you are not auditing, so you will not take up and bring that name over there. So here suppose XYZ International है, proprietor of whose proprietor is say Ujjwal Goyal, so you will write the name of the assessee as XYZ International, proprietor Ujjwal Goyal, not Ujjwal Goyal, proprietor of XYZ International, right? Because you are not doing the audit of Ujjwal Goyal, you are doing the audit of XYZ International, whose proprietor is Ujjwal Goyal. So that has to be understood. So there From is another context, yes. From Vineet Goyal, sir, my query is that if any difference between AIS and statement provided by client for sale of securities, in that case, what will be considered? I'll take up this. I know this is a burning issue, so I'll take up when I'll take up the ITRs, right? Now, name of the assessee is clear, so you have to take the proprietorship. One more, for this season also, the guidance note is also specifically clear on this. And also, when the tax audit report say a proprietor, a individual is there, उसके 3-4 businesses हैं. एक business वो आगरा में कर रहा है proprietary concern में, एक business से
दिल्ली में कर रहा है, एक बॉम्बे में कर रहा है, और तीनों के उसके अलग अलग ऑडिटर्स हैं, तो आपको क्या नाम लिखना होगा? अगर तीनों ने एक ही नाम लिख दिया इंडिविजुअल का तो गलत हो जाएगा, बिकॉज वो इंडिविजुअल का ऑडिट नहीं कर रहे, वो उसकी उस पर्टिकुलर प्रोप्राइटरी कंसर्न का ही ऑडिट कर रहे हैं. That is why the name of the concern, business concern, has to come first, right? Address we all know should be there. ये आप पैन डेटा बेस से या उसके रिटर्न से मैच कर सकते हैं. पैन नंबर, कस्टम एक्साइज, क्लॉज 4 is important, easy, status is easy, previous year, assessment year. Then clause 8 is important because किस particular subsection में audit हुआ है? 44 AB में. AB के अंदर भी क्लॉज A, B, C, D है कि 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे हुआ है, या प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के अमाउंट नहीं है उसका इसलिए हुआ है, या प्रोफेशनल है तो वो मेंशन करना है. फिर एक नया चेंज आया था कि वेदर द एसएससी इज ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स रिजीम, अगर वो किया हुआ है सो देन दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द टैक्स ऑडिट फॉर्मेट. पार्ट बी आपको इन द केस ऑफ फर्म्स, ये आपको जितने भी उसके एज ऑफ 31 मार्च जो उसके पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो है वो मेंशन करना है, और साल भर में अगर कोई चेंज हुआ है देन दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन क्लॉज 9. Clause 10 speaks of nature of business which has to be mentioned over here. Here I would like to lay emphasis to the students that at times when you are doing the audit, last year तक वो केवल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था XYZ चीज की, इस साल से उसने ट्रेडिंग भी चालू कर दी है. तो try to bring that fact to the point, to the knowledge of your principal that उन्होंने अपनी business activity change कर दी है. Why? Because इसके आगे आपके कोड्स दिए हुए हैं. So you have to see when the return is to be filed कि करेक्ट रिटर्न फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही कोड में फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा. Then clause 11 says of the books of accounts, प्रिस्क्राइब्ड है, प्रोफेशन के केस में प्रिस्क्राइब होती हैं. और लोकेशन क्या है? It is important to say and state as to where the books of accounts are kept. Why? जीएसटी में भी आप देखते हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखी गई हैं, या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, वो पूछते हैं आपसे जीएसटी के अंदर भी. इनकम टैक्स के एक्ट में भी दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्म 3CD के अंदर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखी जा रही हैं, कहाँ मेंटेन्ड है. सो ये देखना बहुत जरूरी है. कंप्यूटर सिस्टम पे मेंटेन्ड है ये मेंशन करना गलत होगा, टैली सिस्टम से मेंटेन्ड है ये मेंशन करना गलत होगा, बट फिजिकल लोकेशन क्या है उसकी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. एंड देन यू हैव टू मेंशन कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने एसएससी मेंटेन करता है और आपने क्या चेक करी है, ये आपको सेक्शन क्लॉज 11 में देना है. क्लॉज 12 सेज कि अगर प्रेजेंटिव टैक्सेशन किया हुआ है तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है. क्लॉज 13 इज वेरी सिंपल, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैश और मर्केंटाइल, बिकॉज अब मिक्स सिस्टम रह नहीं गया तो कैश और मर्केंटाइल, एंड देन वेदर देयर इज एनी चेंज तो वो आपको मेंशन करना है. देन क्लॉज 13 का सब क्लॉज डी है which says कि adjustments in complying with ICDS as notified in section 145 subsection 2. तो ये जो उन्होंने ICDS दिए हुए 7-8 ICDS हैं, इसके ऊपर में आपको डिस्क्लोजर देना है और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या है, that has to be mentioned. Clause 14 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आप कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू किस पे वैल्यू कर रहे हैं, that has to be mentioned and it should be consistently followed by the assessee throughout the year and for different years also. Then as I said कि जहां 145A में कोई deviation है, in the method of valuation as prescribed for sale, purchase, valuation of closing stock, valuation of opening stock, तो वो वहां को आपको mention करना है. Then in clause 15 capital asset converted into stock in trade. Can someone give me an example where generally capital asset is converted into stock in trade and it has to be reported over here, and we as tax auditor many times miss reporting it over here? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप एसएससी हैं जिसने अपना कोई कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है,
एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल काफी सारे हो सकते हैं बट ये बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है। The example is where land which was capital asset for a particular person, वो उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दी। पुरानी लैंड आपके पास पड़ी है, आपने सोचा कि मैं उसको इकट्ठा क्या बेचूं, उसके ऊपर फ्लैट्स बना के बेच देता हूं या उस पे कॉलोनी डेवलप करके बेच देता हूं। So which a land which you are holding as capital asset for obtained number of years, you have converted it into stock in trade. So that is why Form 3CD wants the tax auditor to mention description of the capital asset, date of acquisition, cost of acquisition, and amount at which the asset is converted into stock in trade. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मेंशन करना है कि ये है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द लाइबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन वुड अराइज एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 या 3 व्हाटएवर इज देयर, राइट। सो व्हेन अ पर्टिकुलर लैंड किसी की है और वो उसको लैंड होल्ड किए हुए उसको बिजनेस चालू करता है उसके ऊपर, देन दिस क्लॉज इज इन्वोक्ड। सो दैट इज व्हाई आई सेड काफी रेयरली होता है बट कहीं कहीं होता है, तो you have to mention it correctly over here. Then clause 16 says amount not credited to profit and loss account being items within 28, duty drawbacks, escalation claims, any other items of income and capital receipts. Now I would like to state to the students that many a times we see in the tax audit, आप लोग काफी बार इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट्स क्रेडिट हो रहे होते हैं एक प्रोप्राइटरी कंसर्न के या पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर, वो मेंशन कर देते हैं। अब आजकल एज यू ऑल नो दैट इनकम टैक्स रिटर्न्स में प्रोसेसिंग के टाइम पे 143(1) में एडजस्टमेंट्स काफी आने लग गए हैं, ऑटोमेटिकली सीपीसी करके देने लग गया है, तो वो फिगर्स यहां से उठाता है फॉर्म 3CDs, राइट। सो आई वुड से डोंट पुट इन एक्स्ट्रा फिगर्स because the heading says amount not credited to profit and loss account, because what will happen under when the processing takes place, then processing में वो क्या करेगा कि वो जो फिगर आपने यहाँ कॉलम 16 में मेंशन किया हुआ है, क्लॉज 16 में मेंशन किया हुआ है, वो उसका एडजस्टमेंट प्रोसेसिंग में कर देगा और आपकी इनकम को एनहांस कर देगा। हो सकता है आपने वो इनकम अलग कहीं दिखा रखी हो अपने रिटर्न में, बट अगर क्योंकि टैक्स ऑडिटर ने मेंशन कर दिया उसको यहाँ पर, तो वो उसका एडजस्टमेंट कर देता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स नॉट टू शो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ओवर देयर। क्लॉज 17 इज फॉर 43CA एंड 50C। अगर कोई आपने लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द ईयर विच इज लोअर देन द सर्किल रेट, then this clause is invoked and you have to mention the difference over here. Sir, there is a question in the chat box that whether we need to report the GST refund amount in clause 16. In clause 16? Yes, sir. No, GST refund. What GST refund? GST refund would be basically the excess GST which you have deposited, that you have refunded back. So I think since it is not a trading receipt, it is basically refund of the excess duty which you have paid. So that is not your income. It will not have to be shown under clause 16, excess GST which has been refunded to you. Because वो GST जो रिफंड हुई है वो आगे या तो आपने एक्स्ट्रा पे कर दी थी, वो वहां से डेबिट में खड़ी होगी, वो आ गई आपके पास, या आपने उसको एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया तो वो इनकम में डेफिनेटली आ रहा है। Clause 18 speaks of the depreciation. I think it is simple and everyone is doing it for years together. Depreciation का schedule है which has to be mentioned by you. Clause 19 speaks of amount admissible under the different sections of the act, which is also easy. यहाँ केवल एक reporting requirement है. Then clause 20A, यहाँ पे काफी बार देखा गया है कि जो बोनस पेबल का फिगर होता है, आप वो बोनस पेबल का फिगर या बोनस का फिगर यहाँ लिख देते हैं. If you read it correctly,
It says any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend. It does not say that जो आप नॉर्मल बिजनेस नॉर्मल एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन दे रहे हैं उसको मेंशन करना है यहाँ पर. ये वो पूछ रहा है कि कुछ आपने अगर एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको दिया है, देन इट हैज टू बी मेंशन्ड ओवर हियर. बिकॉज अगर आप यहाँ पे कोई फिगर मेंशन करते हैं तो वो आपकी कंप्यूटेशन में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर देता है, विच इज रॉन्ग, which again increases the tax liability unnecessarily for the assessee. So here generally nil will come. Details of contributions to employees, as we all know, this is a very important section and last year amendment हो चुका है इसमें. तो अगर ड्यू डेट के बाद पीएफ ईएसआई का पेमेंट आप एम्प्लॉय शेयर का कर रहे हैं, so then that has to be shown over here. So please mind कि इसके अंदर केवल एम्प्लॉय शेयर आपको मेंशन करना है. इसके अंदर जो टोटल उसने पे किया वो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है. नेचर ऑफ फंड, ईएसआई और पीएफ, सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज, जो आपने एम्प्लॉय का डिडक्शन किया वो मेंशन करना है ओवर हियर आपको, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या थी और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है, एंड द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज क्या है वो मेंशन करनी है आपको ओवर हियर. Clause 21 says amounts debited to profit and loss account. Again, I am harping on this term, amounts debited to profit and loss account. ये आपको यहाँ मेंशन करना है in the nature of capital expenditure, personal nature, advertisement expenses, because again इसका disallowance हो जाता है. So capital expenditure अगर capitalize किया हुआ है वो मेंशन नहीं करना. Personal expenditure काफी बार ये देखा गया है पार्टनरशिप फर्म्स में या प्रोप्राइटरी फर्म्स के अंदर कि असेसी अपने आप 1/10, 1/4 या 10% एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर लेता है बीइंग पर्सनल इन नेचर. तो अगर उसने सो मोटो डिसअलाउ कर रखे हैं और उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर दिया है एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट एक्सपेंडिचर ही डेबिट किया है, देन पर्सनल एक्सपेंडिचर विल नॉट बी शोन ओवर हियर, राइट. Moving forward, advertisement expense, club expense, penalty, ये इस साल से और stringent होता जा रहा है कि penalty or violation of any fine है, then that has to be mentioned over here. Then subclause B says, there is a question in the chat box. It says whether we need to report GST refund amount in clause 16. I have already answered. Then say, sir, whether impairment of asset will be considered as capital expenditure or revenue expenditure. See, जो impairment का हमारा AS accounting standard है impairment of asset का, it says कि जहाँ carrying cost हमारी asset की हमको लगता है कि is not correctly shown, then that impairment loss is to be mentioned over here. And as we all know, impairment loss हमारा allowable expenditure नहीं है, right? So it would not be allowed in computing. Now the question comes कि क्या इस क्लॉज के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहां आपको मेंशन करना है. इट इज नॉट एग्जैक्टली अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट इट इज इम्पेयरमेंट का, जहां उसकी यूजेबिलिटी कम हो गई, एक पर्टिकुलर असेट की आपको लग रहा है वैल्यू कम हो गई, तो वहां आप मेंशन कर रहे हो. सो दैट इज व्हाई इट वुड नॉट बी मेंशन्ड ओवर हियर, बट इन द कंप्यूटेशन इट हैज टू बी डिसअलाउड, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, इनएडमिसिबल अमाउंट्स अंडर क्लॉज 40A, ये टैक्स पेमेंट्स हैं, इनकम टैक्स पेमेंट्स हैं जो डिफरेंट सबसेक्शंस में दिए हुए हैं. यहाँ जो डिसअलाउंस होना है दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन एज पर सेक्शन 40A in these different clauses. Another question is there, thanks, okay. Now this comes disallowance or deemed income as per section 40A(3). So 40A(3) speaks of the business disallowances where cash payment exceeding 10,000 rupees is there. A question has come up in the chat box which says, sir, whether business promotion expenses like foreign tour, dollar purchase, etc.,
related to business can be debited in profit and loss account. Definitely, when a business promotion expense is there and it is related to business, then definitely it will be debited to the profit and loss account. There is no other way or column or place where you will be debiting. If personal expenses are there, then definitely it would not be debited to the profit and loss account. It will be debited to your capital account or to your personal account. But business expenditure, all are debited to the profit and loss account. So 48.3 you have to mention, and you have to be very careful while doing the audit. Key correct particulars are mentioned in 48.3. Then any disallowances in as per section 14A, they have to be mentioned here. Then amount of expenditure inadmissible under the proviso to section 36(1)(3). 36(1)(3) says कि अगर कोई interest आपने pay किया है on a asset which has not been put to use, then that interest amount is not a allowable expenditure and that has to be mentioned. ये information आप लोग कहाँ से extract करेंगे while doing the audit? कि कोई amount ऐसा हो सकता है जो assessee ने कैपिटल असेट बनाने के लिए यूज किया है, बट उसका इंटरेस्ट को प्रॉपर कैपिटलाइज नहीं किया है. एनी आंसर्स? द आंसर लाइज देयर दैट अगर कोई टर्म लोन लिया हुआ है एसएससी ने, तो आपको उस टर्म लोन को देखना है, बिकॉज टर्म लोन इज टेकन फॉर बाइंग एन असेट. So when a term loan is taken, तो आपको देखना है कि टर्म लोन में जो इंटरेस्ट पे किया गया है इनिशियली, वो सारा का सारा अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज कैपिटलाइज हुआ है कि नहीं हुआ. ऐसा ना हो कि टर्म लोन लिया है एसएससी ने और उसका इंटरेस्ट बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज कैपिटलाइज नहीं किया और खर्चों में डाला हुआ है. सो हियर इट इज आस्किंग यू कि उस अमाउंट को आपको इनएडमिसिबल रिपोर्ट करना है, राइट? So this clause is very important over there. Many a times this clause is missed by the chartered accountants and by the articles also. Amount of interest inadmissible under the Micro Small Messment Act, which has to be mentioned. Payment of particulars under section 48(2)(b). Here you have to mention the amounts which have been paid under 48(2)(b) to the relatives. रिलेटिव की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इस सेक्शन के लिए रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 वाली होगी, ना कि सेक्शन 56 वाली. ये ध्यान रखिएगा. देन क्लॉज 41 के हिसाब से अगर कोई अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स एंड इट्स कंप्यूटेशन, जहां सेसेशन ऑफ लाइबिलिटी होता है, वो क्लॉज 41 के बारे में बोलता है. Then clause 26 is important. Generally हर रिपोर्ट में इसमें रिपोर्टिंग होती है कि clause 43B में सब clauses A, B, C, D, E, F, G में अगर कोई अमाउंट है जो 31 मार्च तक आपने पे नहीं किया है और आउटस्टैंडिंग है, so then when it has been paid and whether it has been paid before the due date of filing of the return, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. Clause 27 is there regarding the cinematic credits, because अब excise नहीं है तो I think nothing will come up over here. काफी जने लोग बाग GST के बारे में लिख देते हैं, but guidance note says कि GST के figures would not be mentioned over here. Particulars of prior period income or expenditure, जो भी कुछ है, that has to be mentioned over here. Prior period expenditure वहीं आएगा जहां आप mercantile system of accounting कर रहे हैं. अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो इस कॉलम में कोई भी फिगर कभी भी नहीं आएगा. क्लॉज 28 स्पीक्स ऑफ इनकम्स रेफर्ड टू इन क्लॉज 56 to 7A, then 7B, and then clause 9 and clause 10. So all this takes care of in clauses number 28 to 29. क्लॉज 30A, अभी तक ये हर साल गवर्नमेंट यूज्ड टू डेफर इट, बट दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज नॉट डेफर्ड इट. So if any reporting has to be done in relation to transfer pricing,
and adjustments thereof, then that has to be reported over here by the tax auditor. Then in clause 31, the reporting for loans taken during the year has to be mentioned, which exceeds rupees 20,000. So wherever any loans are, unsecured loans are taken by the assessee, then the computation or the disclosure under this clause has to be clearly mentioned, naming the name, address, PAN, and loan taken, amount of loan taken, repaid, and the mode of accepting. So this clause 31 takes care of your loans taken, then specified sum. Clause B is there, where any amount has been received against sale of any land or building in cash, then that has to be mentioned in clause B. BA is for 269 ST, जहां पे 2 लाख रुपए से ऊपर के कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं, जहां आपने कैश रिसीव किया हो किसी भी आदमी से 2 लाख रुपए से ऊपर, फॉर एनी पर्पस, ओकेजन, or in exchange of any work or sale of material, then all that has to be mentioned in clause BA. BB again speaks of 269 ST, BC also ST, BD ST. This whole clause speaks of only that section. Then clause 32 speaks of as they brought forward losses, if any are there, they have to be mentioned by the tax auditor in the format given in form 3CD. So this is the format जिसके अंदर आपको जो बिजनेस के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं उनके बारे में लिखना है. अब अगर आप नए ऑडिटर हैं किसी कंसर्न के पहली बार, then you have to mention and you have to take care of the previous year audit, previous year return filed by him, and then correctly this amount has to be mentioned from the return as well as from the tax audit report there. Here someone has circled it as to the adjustment amount as adjusted by withdrawal of additional depreciation on account of opting off taxation under section 115B AC and 115 BAP. Here, as you all know, the Income Tax Act has new tax regime, where they say that additional depreciation would not be allowed to you if you opt for new tax regime. Only normal depreciation would be allowed. So at times what happens is that additional depreciation आपने पहले claim किया हुआ है और इस साल का कुछ part additional depreciation पड़ा हुआ था, तो वो अगर part आपने debit किया हुआ था books में, तो उसका कोई adjustment हुआ है या होना है, so then that amount has to be mentioned over here, nothing more than that, right? So this speaks of the new tax regime जहां पे additional depreciation के ऊपर वो पूछता है आपसे. Then clause 32B says of section 79, अगर किसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डिंग चेंज होती है, what happens is 51% से ज्यादा, then what happens is that जो उसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो to that extent आपका extinguish हो जाता है. So that as tax auditor you have to mention in clause 32 subsection subclause B. Speculative losses हैं as per section 73, वो C clause में आपको mention करने. Then clause 33 says of deductions which you claim under chapter 6A and chapter 3, वो आपको deductions के बारे में लिखना है यहाँ पे. Clause 34, as we all know, is an important clause for us as articles when you are doing the audit, which says of the schedule of TDS, and this schedule of TDS in entirety has to be filled up correctly by the assessee, and you have to cross verify it as the auditor concerned over there. Different columns है उसमें कि उसने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कितना पेमेंट किया है, प्रोफेशनल फीस में, सैलरी में, कमीशन में, रेंट में,
and different provisions में, and then these columns have to be filled up according to the information which is required there. Clause 35 is important because in case of a trading concern, principal items जो हैं, जो trading हो रही है, that have to be mentioned in clause 35 very carefully by you when you are doing the audit. यहाँ काफी बार देखा गया है कि बैलेंस या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आप ये क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं फिल अप करते, तो प्लीज मेंशन द क्वांटिटेटिव डिटेल डिफरेंटली फॉर ट्रेडिंग आइटम्स and in clause B, sub clause B for manufacturing concerns जहां manufacturing हो रही. (36A) speaks of deemed dividend. As in my second slide, I had shown that transaction audit होता जा रहा है ये आपका work. So यहाँ कोई deemed dividend receive किया है, then you have to mention as a tax auditor over there. 37 में जहां cost audit important है, cost audit mandatory है to for a manufacturing concern to take place, और वहां पे कोई disqualification है, then that has to be mentioned, as well as clause 38 जहां Central Excise Act में पहले एक excise का audit होता था, अगर कोई disqualifications थी तो वो mention होती थी. Clause 40 speaks of the accounting ratios which are there. 5 accounting ratios are there, so which have to be mentioned in this clause at 40 in your tax audit report. 41 is concerning the demands raised under income tax or wealth tax. Since wealth tax has gone, so we don't mention the demands raised under wealth tax, but now demands raised under income tax have to be mentioned and shown over here, and what relevant proceedings are being carried out. एक clause 42 important है जहां वो furnishing of form 61 and 61A पूछ रहा है, जो specified financial transactions के लिए होता है, SFT के लिए होता है. जिन entities का हम audit करते हैं वहां generally 2 या 3 transactions हैं which ought to be reported in clause in this SFT provisions. It is first of all is where shares, where amount is received by a company for share allotment exceeding 10 lakh rupees in a year, तो वहां पर आपको SFT return file करना है in form 61 and 61A, and if the assessee has not filed that form of SFT, then the tax auditor has to mention it. और अगर उन्होंने फाइल किया हुआ है तो कब फाइल किया, क्या नॉर्मल डेट थी, वो आपको मेंशन करना है. Then clause 43, clause 44, इस टाइम काफी कंट्रोवर्सी चल रही है जो ये लास्ट क्लॉज है clause 44 के ऊपर. अभी तक जब ये 2018 में आया था इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंज, तब तक 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स के ये गाइडेंस आती रही कि ये क्लॉज वो सस्पेंड किए हुए हैं 2 साल तक. सो 31 मार्च 2022 तक की जो रिपोर्ट्स थी उसमें ये क्लॉज सस्पेंडेड था. अब सिंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 वी हैव टू गिव द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, that is इस फाइनेंशियल ईयर में. सो जो लास्ट सर्कुलर 20 मार्च 21 का CBDT का है, which said that this clause would remain in suspended ammunition, so that has now to be reported for tax audits done for 21-22 minded. इसके अंदर मेंशन क्या करना है, I let you know that एक ये सेमिनार या ये आपकी वेबिनार छोटी पड़ जाएगी, इसके अंदर क्या मेंशन करना है. Last week I had a webinar from Jalandhar where more than 300 participants were there, and there we discussed only this clause 44. So केवल एक वेबिनार थी, ऑर्गेनाइज करी थी जलंधर ब्रांच ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, where more than
300 participants were there and in association with Voice of India. And that webinar of mine is there available on YouTube channel also, where a whole seminar of 1 hour took place on clause 44 itself. We also have a request that is pending. Please discuss about clause 44 and give clarification whether applicable for financial year 21 and 21-22. So I think it's clear. 015225. What's your name? See, as I've already stated, that clause 44 for this financial year, that is 21-22, when we are doing the audit for 21-22, clause 44 is applicable, and you have to mention the particulars over here. Now, a mute question comes up as to how would we be mentioning these questions or the answers to these points which have been raised over here. So this has to be discussed by you with your principal concern, the chartered accountant concern, that whether amounts have to be mentioned over here or a disclaimer should be given over here, right? So whatever stance your office is taking, you have to abide by that, and then you have to mention. Because the purpose of this clause 44 is for the government to have a data to see कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर हैं जिस पे आप जीएसटी पे नहीं कर रहे. As students, can you understand the purpose? ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है जिस पे आप जीएसटी पे नहीं कर रहे, वो मेंशन करा रही है गवर्नमेंट आपसे यहाँ पर. Because this information will be shared for data analytics and for other purposes. और यहाँ basically वो expenditures होते हैं which you all understand at times जहाँ आप profits को adjust करते हैं. Because आज के regime में today we are sitting on 23rd of July. मैं आपसे बोलूं कि जून के डेट का कोई बिल ले आइएगा एक्सपेंडिचर का, कोई भी नहीं ला पाएगा. बिकॉज जून का उसका GSTR 1 फाइल हो चुका, GSTR 3B फाइल हो चुका. So at times when the assessee has to adjust the expenditures, वो non-GST expenditures को debit कर देता है. And that is where if the non-GST expenditures are at a higher amount, then definitely some problem is in store for the assessee. So I think with this we have tried to cover Form 3CD to the best of my ability, so that it is easily understandable and available for you all. Coming back to the presentation, the changes in ITRs. ITR 1, as you all know, is for incomes below 50 lakhs, salary income, only one house property, and no capital gains. Then ITR 1 has to be filed. ITR 2, जहाँ assessee की कोई business income नहीं है, but capital gains की income है share खरीद बेच पर. Then it has to be mentioned in ITR. Then he has to file the return in ITR 2. ITR 3 is for business income. ITR 4, Sugam जो आ गया है, it is for business income up to 50 lakh of rupees, जहाँ basically आप presumptive taxation में जा रहे हैं. ITR 5 is for other than individuals, that is firms, LLPs. ITR 6 is for companies other than those claiming exemption under Section 11. And ITR 7 is for those entities which are charitable, educational, or which claim exemption under Section 10 or Section 11 and 12.
Now, madam, we have ITRs also, but I think that will take much time. So the queries which were raised, now I would like to share with you the practical aspects of ITR 3 or ITR 5 मैंने दिखाया हुआ था, but I think that will eat much of our time and it is not also important. What we have to see is now when this is the return filing season, though it is only for individuals and basically for salaried people and small business income people till 31st of July. So first of all, when you are filing a return for any of the assessee in your office, you have to first of all download the annual information state. Because आज I think ये एक बाइबल हो गई है, गीता हो गई आपके लिए. जब रिटर्न फाइल करना है, असेसी नहीं भी आ रहा, उसका फोन आया है कि भाई मैं 5 बजे आऊंगा अपना रिटर्न फाइल करने, तो आप ये ब्रह्मास्त्र आपके पास है, खोल के बैठ जाइए और फिर उस असेसी से मजे देखिएगा. वो अगर सिंपल असेसी है तो वो आके कहेगा साहब मेरी तो केवल सैलरी इनकम है और उसका रिटर्न फाइल करना है मेरे को. If you all have seen AIS, I think सब लोग रोज देख रहे हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है. उसकी सारी सैलरी इनकम, कहाँ TDS कटा हुआ है जो फॉर्म 26 AS में भी आ रहा है, कहाँ से उसको डिविडेंड इनकम आ रही है, वो कहाँ से उठा रहा है, वो SFT से उठा रहा है. अगर हम AIS देखेंगे तो AIS में डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं, राइट. उन कॉलम्स में साफ दिया हुआ है कि ये इंफॉर्मेशन उसकी SFT से आ रही है, डिविडेंड वगैरह की इंफॉर्मेशन. क्रेडिट कार्ड का कुछ पेमेंट कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन भी उसकी SFT से उठ के आ रही है. इन टाइम्स टू कम एयर ट्रैवल की इंफॉर्मेशन भी आएगी, हायर पेमेंट जो होंगे वो आएगा, कंपनी में शेयर्स खरीदे किसी ने 1 लाख रुपए से ऊपर, वो भी आएगी. ना सिर्फ खरीदे हैं बट शेयर एप्लीकेशन भी लगाई है अगर आपने, तो वो इंफॉर्मेशन भी यहां पर आती है AIS में. अभी काफी जगह नहीं आ रही है बट वो इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है टू बी फिल्ड इन फॉर्म 61 and 61A in as per rule 114 and as per section 285 of the Income Tax Act. AIS के अंदर उसका कितना टर्नओवर हो रहा है, GST में जो रिपोर्टेड है वो आ रहा है. AIS में अभी लेटेस्ट जो एडिशन हुआ है, क्या लेटेस्ट एडिशन हुआ है AIS में, कोई बताएगा? So that I can understand, yes, the students are listening to my webinar. क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन AIS में आना चालू हुई है पिछले 1 हफ्ते में? बताइए. मैंने आपसे कहा था आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आप ब्रह्मास्त्र यूज ही नहीं कर रहे. चैट बॉक्स में डिटेल्स ऑफ परचेजेस, यस, सूरज कुमार हैज राइटली स्टेटेड दिस. दैट मींस ही इज फाइलिंग रेगुलरली, फाइलिंग द रिटर्न्स. गुड सूरज. डिटेल ऑफ परचेजेस जो GST में मेंशन हो रही है उसकी, वो अब AIS में आने लग गई है. Even 015225 has also mentioned the same. सेल तो पहले हमारी 26 AS में भी आ रही थी और AIS में भी आ रही थी, बट अब लेटेस्ट उन्होंने परचेजेस मेंशन करना चालू कर दिए हैं. अब जब परचेजेस मेंशन करना चालू कर दिया है, अभी तो छोटे छोटे रिटर्न्स आ रहे हैं, आप इजीली मैच कर पाएंगे. जब आप टैक्स ऑडिट करेंगे, then as a tax auditor, will you be able to match these figures of purchases? जब आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं कंपनीज की या अच्छी बड़ी फर्म्स की या प्रोप्राइटरी बिजनेसेस की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस फाइनलाइज कर रहे हैं, क्या आप लोग अपने वर्किंग पेपर्स में उनका GST से जो रिटर्न ऑफ फॉर्म फाइल किए हैं उसका रिकंसिलेशन ले रहे हैं? My mute question to you all today is,
बिकॉज जीएसटी में आपकी परचेजेस भी आ गई। काफी बार ऐसा होता है कि आपका जीएसटी परचेज के अंदर जो फॉर्म GSTR 2A है उसके अंदर परचेजेस या जीएसटी का जो इनपुट क्रेडिट है वो आता है। बहुत सी बार एक्सपेंडिचर आपने बुक्स में नहीं डाला हुआ, वो उसके अंदर आ रहा है। सो यू हैव टू सी दैट ऑल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। काफी बार ये हो रहा है कि एक्सपेंडिचर आपने इंक्लूडिंग जीएसटी बुक कर रखा है, उसका जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं लिया हुआ, तो वो आपको मैच करना है। आपको ये भी देखना है कि जहां इनएलिजिबल जीएसटी है, अंडरस्टैंड, इनएलिजिबल जीएसटी मींस कि जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट आप नहीं ले सकते, लाइक एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कार्स, उनकी इंश्योरेंस, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस, टायर सर्विसेज एक्सेट्रा। फूडिंग के ऊपर कोई खर्चा है आपका, वो आप उस पर जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। इंश्योरेंस के ऊपर कोई खर्चा है आप पे, तो उस पर आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। सो वाइल डूइंग द ऑडिटिंग, वाउचिंग एंड फाइनलाइजिंग और स्क्रूटनाइजिंग द बैलेंस शीट्स, प्लीज टेक केयर कि जो इनएलिजिबल आईटीसी है जीएसटी में, उसका उसने क्रेडिट तो नहीं ले लिया। अगर क्रेडिट ले लिया तो उसका आप रिवर्सल कराइएगा एंड आस्क द असेसी टू पे द जीएसटी अमाउंट देयर। सो एआईएस में जब परचेजेस की इंफॉर्मेशन आ गई, so then you have to correlate it and match it with what is coming over here. एक क्वेरी बॉक्स में एक क्वेरी आई है, सर वेदर वी कैन क्लेम जीएसटी ऑन एनएसडीएल एनुअल चार्जेस ऑफ कंपनी। सी, कंपनी ने जब जीएसटी पे किया हुआ एनुअल चार्जेस पे एनएसडीएल में जब अपने शेयर्स को डीमेटीरियलाइज कराया हुआ है, so that is not in regard to shareholding or share transfer, but it is in regard to the share capital. And once it is regard to the share capital, and the ITC which has to be taken credit of should be in relation to the business being done by the assessee. Since share capital is for the purpose of business, therefore the ITC on demat charges of NSDL can be claimed by the assessee. Some people might have difference of opinion, but I am of the opinion that in that case the ITC credit can be taken off GST of the demat charges. So coming back, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जब भी कोई एसएससी आपके पास रिटर्न फाइल कराने आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। ये एक्सेल में डाउनलोडेबल है फॉर दी शेयर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन ओनली। तो वो जो शेयर ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके अंदर सेल, डेट ऑफ सेल आ रही है, शेयर, बाकी सारे कॉलम्स आ रहे हैं। बस उसमें परेशानी आ रही है, डेट ऑफ परचेज नहीं आ रही इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म शेयर्स, जहां वो शेयर 1 साल से ऊपर के हैं। स्लोली एंड स्टडीली आई थिंक दैट शुड आल्सो कम, सो देयर it has to be mentioned over there. Now, Sakshi ji had asked me a question that someone had a query regarding share transactions as to how they have to be shown in the income tax return. So, अगर AIS से वो information आपकी easily downloadable हो रही है, Excel में format बनाइए, then the software, whichever you are using software, काफी लोग Computex use करते हैं या income tax की utility use कर रहे हैं, so उसके basis के ऊपर you can show the required details in the columns, and then capital gain information will come up over there. A query has come, sir, sometimes cost of purchases भी नहीं आ रही है. Yes, cost of purchases नहीं आ रही, तो उसके अंदर अगर long term capital, long term share है हमारा, so there the concept of grandfathering would be very easy for us. As we all know that in 2018, when the Honorable Finance Minister Arun Jaitley brought the share transactions under the ambit of capital gains, there he introduced the grandfathering concept. So 31st January 2018 की अगर आपके पास value है, तो आप वो value ले लीजिएगा, and if you are able to prove that yes, you were holding the shares before 31st January 2018,
तो आप वो कॉस्ट भी ले सकते हैं अगर ओरिजिनल कॉस्ट आपको नहीं मिल रहा। आस्क द एसएससी की ओरिजिनल कॉस्ट लेकर आए, अगर नहीं ला पा रहा देन डेफिनेटली यू हैव टू शो। अपार्ट फ्रॉम दैट, when an assessee comes to your office for getting the return prepared, then you should ask him that जो उसका ट्रेडिंग अकाउंट है, कोटक सिक्योरिटी से कर रहा है, जीरोधा से कर रहा है, HDFC से कर रहा है, या कहीं से भी कर रहा है वो शेयर ट्रेडिंग, तो आजकल जितने भी एप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं वो कैपिटल गेन्स की एक अकाउंट, एक समरी बना के दे रहे हैं, राइट, in Excel format, so that can be easily downloadable and then information उससे निकाल के आप यहाँ fill up कर सकते हैं। In the query box there is a query, is that in that case what cost we will consider, and client does not provide statement. Sir, if short term है तो क्या cost consider करेंगे? See, in short term the cost also has to be considered, sale consideration and cost price दोनों लेनी है आपको, बिकॉज दोनों का आपको कॉलम में फिलअप करना है। बट बाय सम चांस यू आर नॉट एबल टू गेट द सेल कंसिडरेशन एंड द कॉस्ट प्राइस, एंड यू आर एबल टू हैव द फिगर ऑफ ओनली द गेन और लॉस व्हिच हैज इंकर्ड इन दोज शेयर ट्रांजैक्शन, तो आप कंसोलिडेटेड फिगर भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स यूटिलिटी आपको अलाउ करती है कि आप कंसोलिडेटेड फिगर फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले सकते हैं। वहां फिर आप सेल और परचेज को मत मेंशन कीजिएगा, कंसोलिडेटेड फिगर मेंशन कर सकते हैं वहां पर आप। मैडम कोई और क्वेरी थी किसी की कैपिटल गेन से रिलेटेड, कि रिटर्न में कैसे दिखाना है या कुछ क्या करना है? आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं। उज्जवल, आपकी क्वेरीज थी ना कैपिटल गेन्स रिगार्डिंग? यस सर, एक और सर, एक पहले क्वेरी आई है सर, शॉर्ट टर्म सेल में कंसिडरेशन है बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आई है AIS में, तो क्या कॉस्ट लेंगे? क्वेरी इन चैट बॉक्स। सी, जहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी नहीं आ रही है एंड द क्लाइंट इज नॉट गिविंग यू दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आप नेट प्रॉफिट जो उसने दिखाया हुआ है वही ले लीजिएगा कंसोलिडेटेड फिगर को लेते हुए, राइट? सिंस द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, हाउ व्हाट कैन यू डू? बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होगी। दैट मींस ड्यूरिंग द ईयर ही उसने वो ट्रांजैक्शन किया है। आस्क द एसएससी टू ब्रिंग आउट दैट इंफॉर्मेशन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, जिस भी सिक्योरिटीज वाले से वो ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे जीरोधा है, HDFC है, कोटक है, ICICI डायरेक्ट है, जिस पे भी है, सबके यहाँ कैपिटल गेन्स की समरी निकल रही है। You should sit with him and extract that capital gain summary. I would ask each and everyone कि इन फिगर्स को पंचिन बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सीधा सीधा उससे कहिएगा कि अपनी समरी ला के दे एक्सेल के ऊपर, और वो आप डायरेक्ट फीडिंग कीजिएगा उसके अंदर। बैठ के एक एक एंट्री को पंच मत कीजिएगा, बहुत टाइम वेस्ट होएगा आपका, and it will serve no purpose for you. Please mind it, because I think the caliber of a CA student lies in the fact that how quickly and efficiently is able to do the transaction, file the return. तो आप एक एक इंफॉर्मेशन को पंचिंग करने बैठ गए, जो इंफॉर्मेशन उसके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन आया है, सर, इफ वी हैव इंट्राडे लॉस ऑफ वेरी less amount, say 600 rupees, only 5 transaction, can we ignore it in the return? I would say please don't ignore it, mention it कि वो 600 रुपए का लॉस हुआ है उसका, because if you are ignoring it, then जो verification part है आपका रिटर्न का, you are not doing justice to that verification part, because that verification part अगर आप कभी देखें जहाँ पे असेसी के साइन होते हैं, वो कहता है कि ये रिटर्न में जो पर्टिकुलर्स मैंने दिए हुए हैं are true and complete। वहां ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर नहीं बोलता, वो बोलता है पर्टिकुलर्स गिवन इन दिस फॉर्म आर ट्रू एंड कंप्लीट, मीनिंग देयर बाय कि अगर आपने 600 रुपए का ये फिगर छोड़ दिया, सो द रिटर्न यू हैव फाइल्ड इज नॉट ट्रू एंड कंप्लीट।
What can I do as an income tax assessing officer? कोई फिगर में छोड़ गया, अब मैं एज इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कर सकता हूं आपका 600 रुपए के लिए, बताइए। बहुत इजी सा सवाल है। इनकम्प्लीट रिटर्न सर? इनकम्प्लीट रिटर्न तो निकाल ही नहीं पाएगा ना, डिफेक्टिव रिटर्न तो कर ही नहीं पाएगा। आपने इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट करी है, द असेसिंग ऑफिसर कैन लॉन्च प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू। सो दिस हार्श दिस प्रोविजन इज, सो वी हैव टू मेक श्योर एंड सैनिटाइज द असेसी कि भाई ये भी हो सकता है। सो प्लीज ट्राई टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। Now there is a query in the chat box that AIS or statement provided by the client में कुछ differences हैं, what has to be done? First of all, try to reconcile the differences as to why the differences are there. If you are able to identify, उसको iron out कीजिएगा कि कहीं duplicate हो रहा है AIS में या क्या हो रहा है। But to my mind, I would say कि जो AIS की information है उसको लेके चलिएगा, वो better रहेगा। अगर उससे ज्यादा कोई tax impact नहीं आ रहा असेसी का, तो AIS की इंफॉर्मेशन लेके चलिएगा, वो बेटर रहेगा। एंड ट्राई एंड आस्क द असेसी टू रिकंसाइल दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से आई है। बट यस, इफ देयर आर मेजर डिफरेंसेस, देन AIS की इंफॉर्मेशन में बिफोर फाइलिंग द रिटर्न यू हैव द ऑप्शन वेयर यू कैन डिनाई द इंफॉर्मेशन। जब आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखेंगे इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके, वहां पे वो आपसे रिस्पॉन्स पूछता है AIS की इंफॉर्मेशन कि द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, द इंफॉर्मेशन इज पार्टली करेक्ट, द इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। अगर इंफॉर्मेशन आपकी नहीं है तो उसको लिख दीजिएगा, डिनाई कर दीजिएगा। द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अनदर पैन, द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अनदर असेसमेंट ईयर। All those options are there. AIS जब आप खोलेंगे तो सारे options मिलेंगे। जो closest और best option है उस पे जरूर response कीजिएगा if there is difference between your figure and the AIS figure. Then in the chat box we have a query. Sir, actually I handled a client who sold securities amount 2 crores but in AIS amount is 2.25 crores. So you have to see कि अगर वो 25 लाख की सिक्योरिटीज जो उसने सेल करी हुई है AIS में आ रही हैं, वो उसने ट्रांजैक्शंस नहीं कैरी आउट किए, तो वो 25 लाख की जो एंट्रीज आ रही हैं वहां AIS में जाइएगा और आप उसको डिनाई कीजिएगा बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। बिकॉज जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है और AIS की इंफॉर्मेशन से वो कंपेयर करता है, और अगर इंफॉर्मेशन वहां पे है 2.25 करोड़ रुपए की और आपने रिटर्न में 2 करोड़ की दिखाई है, डेफिनेटली सम एक्शन वुड टेक प्लेस। सो इट इज बेटर कि आप AIS में इंफॉर्मेशन को या अपने रिस्पॉन्स को फाइल करें। संचित हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट सर कैन वी शो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटर-डे ट्रेडिंग एज कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस? यस, इंटर-डे ट्रेडिंग है, अगर उसने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है then it can be shown as capital gain or capital loss. There is no requirement that you have to show for business profit. Understand one thing. आपने एक शेयर खरीदा for the purpose of investment. सुबह खरीदा, दोपहर तक आपको लगा या कोई उसमें न्यूज आ गई और एकदम से उसके प्राइसेस कम हो गए, आपने उस शेयर को बेच दिया एंड आपका वो इंट्राडे ट्रेडिंग के कंसेप्ट में आ गया। दैट डज नॉट मीन दैट इट इज योर पर से योर बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनली। नो, द इंटेंशन ऑफ मी इन बाइंग द शेयर वाज टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट दिन में ही मैंने फ्लक्चुएशन देखा तो मैंने उसको बेच दिया, तो वो कैपिटल गेन ही रहेगा आपका। इट विल नॉट बी कन्वर्टेड टू speculative business. It will be capital gain. So you have to show is it as capital gain or capital loss, whatever it is, definitely short term. But अगर ये इन transactions की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आप दिन में 5-7 ट्रांजैक्शंस जॉबिंग के कर रहे हैं, इसको जॉबिंग बोलते हैं, और रोज कर रहे हैं या महीने में 20 दिन कर रहे हैं, then it will be your business income. It cannot be your capital gains income, right? So that has to be kept in mind कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं।
इट इज नॉट देयर कि आपने जॉबिंग कर दी, 2-4 ट्रांजेक्शन या 10-20 ट्रांजेक्शन पूरे साल में आपको उसको बिजनेस इनकम दिखानी है. नो, इट कैन बी योर कैपिटल गेन इनकम. बिकॉज हो सकता है आपने खरीदा हो बट लगा कि शेयर प्राइस कम हो गया, आपने बेच दिया. एज अ प्रूडेंट पर्सन, व्हाई विल यू टेक अ हिट बाय इंकरिंग लॉस? व्हाई विल यू इंकर लॉस व्हेन यू आर नोइंग कि ये शेयर अब नीचे जाने वाला है? आपने गलत खरीद लिया या कभी कभी गलती से पंचिंग कर लेते हैं, तो देयर इज नो रीजन फॉर यू टू शो इट एज बिजनेस इनकम. देयर इज अनदर क्वेरी, सर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस के केस में भी कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा? ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, इफ ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन इज फॉर सेल परचेज, then definitely capital gain would be attracted. And since STT is not paid, तो वो 10% की रिजीम में नहीं आएगा. नॉर्मल कैपिटल गेन 20% के रिजीम में जाएगा. शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली नॉर्मल इनकम में टैक्स होएगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% के रिजीम में जाएगा विद बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन डेफिनेटली अवेलेबल टू यू. ऑफ मार्केट डज नॉट मीन दैट ये कैपिटल गेन नहीं रहा. You can sell a share of market also. Sir, I have a query. Yes. Sir, as a student, अगर हमारा थोड़ा सा FNO का बिजनेस में FNO लॉस हो जाए, तो फिर हम उसको स्पेकुलेटिव में दिखाएं या फिर बिजनेस में क्लासिफाई करें? नहीं, as a student, you are saying, you are asking question for your own self. Yes, sir. Yes, sir. आप शेयर्स के अंदर डील कर रहे हैं, आप F&O का काम कर रहे हैं, जहाँ फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ऑप्शंस खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं. उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? क्या आप आज फ्यूचर खरीद के कल बेच रहे हैं, कल खरीद के? बिकॉज फ्यूचर की एक्सपायरी 3 महीने की भी होती है, मंथली एक्सपायरी है फ्यूचर्स की. ऑप्शंस की डेफिनेटली वीकली है, बट फ्यूचर्स की मंथली एक्सपायरी है. जहाँ मंथली एक्सपायरी है, आपने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में खरीदा और लास्ट डे ऑफ द मंथ या लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी में बेचा, सो यू कैन क्लासिफाई दैट टू बी योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. Okay. Once it is your investment activity, then definitely it will go down to capital gain, not to business. Okay, sir. Then, sir, how we will report the loss over there? In case of future, options, in case of options, how we will report the loss in the ITR? In case of options, जब आप shares में जाएंगे, shares की detail में जाएंगे, which software are you using? Computex. Computex के अंदर capital gain के अंदर जब आप share entry करते हैं, वहाँ options के अंदर loss आता है, तो वो क्योंकि option के अंदर वो drop down list में option या futures नहीं आते, right? वहाँ केवल share का नाम आता है, या ISIN है ना, उसमें लिस्ट, उसमें नाम मत डालिएगा, उसमें ऑप्शंस डालिएगा कि F&O ट्रांजैक्शंस या ऑप्शन ट्रांजैक्शंस, और उसका एक कंसोलिडेटेड फिगर आप डाल सकते हैं साल भर के ट्रांजैक्शंस. ओके. बिकॉज वो आपके AIS में भी रिपोर्ट नहीं हो रहा, नहीं होता है ना, इसलिए आप उसका कंसोलिडेटेड फिगर डाल सकते हैं. आई एम शोइंग इन माय रिटर्न्स कंसोलिडेटेड फिगर इन दैट रिगार्ड ओनली. ओके सर. एंड सर, इफ इन केस ऑफ अ क्लाइंट, अगर उसका कोई और बिजनेस नहीं है, हाँ, वो पर्पसली स्पेकुलेटिव कर रहा है, वो FNO कर रहा है, तो हम उससे बिजनेस में ले जाएंगे? 90% वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में फॉल करेंगे, बट यू कैन मेक आउट अ केस कि वो कैपिटल गेन्स भी है. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, महीने में सपोज 5-10 ट्रांजैक्शन कर रहा है, then you can classify him to be capital gains also. बट अगर रोज 5-10 ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो कैपिटल गेन दिखाना आपके लिए मुश्किल हो जाए. Because then the officer will say it is adventure in the nature of trade. सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी रूलिंग्स हैं which says कि कब आप इसको बिजनेस इनकम मान लेंगे और कब कैपिटल गेन्स मान. There is a question, sir, whether to disclose contract income under section 44 AD where TDS deducted under section 194C. Whether we can disclose contract income? Yes, definitely. 44 AD के अंदर आप दिखा सकते हैं. What is the problem? Or what is, how, why this question is raised? I could not understand. Sir, whether we can disclose contract income under 44 AD where TDS deducted under section 194C? Yes, definitely you can show.
So as we all know, the income tax का नया income tax portal आ गया, incometax.gov.in, which is for immediate processing of returns. आप जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं आजकल देख रहे होंगे 10-10 मिनट के अंदर 5-5 मिनट में प्रोसेसिंग हो रही है उनकी, एंड रिफंड्स भी जल्दी आ रहे हैं. सो इट्स अ वेलकम चेंज. थोड़ा स्पीड के प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े इश्यूज हैं, डेफिनेटली वो हो रहा है, बट ऑल थिंग्स विल कम अप करेक्टली. कॉल सेंटर है, मोबाइल का ऐप स्टार्ट होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा. ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी नए पोर्टल के थ्रू हो जाएगा आपको. एक क्वेरी और आई है चैट बॉक्स में. सॉरी, इट्स जस्ट अ थैंक यू फॉर द क्वेरी रेज्ड. If any queries are there, then I think I have the final slide. अगर किसी की कोई और क्वेरी है मैडम? Anyone having any query, please ask. किसी को directly question करना हो, I can unmute you. If you're not comfortable in chat box, please raise your hand. No one? Sir, I think enough of the queries. Good. Thanks. I think with this we come to the close of the webinar, which has so efficiently been organized by Madam under her guidance. And a big thank you to all. आप सभी सोच रहे होंगे कि सर ये ताजमहल की तस्वीर हमको क्यों दिखा रहे हैं? Just to showcase that this is my passion and my hobby to click photographs. और ये ताजमहल की फोटोग्राफ मैंने ही खींची हुई है. So just to show the other side of Deependra Mohan, I have shown you this photograph. कि जब first lockdown हुआ था तब I had an occasion of going there and then I clicked this photograph of Taj Mahal. कितना अच्छा, सुंदर और beautiful लग रहा है. Right, sir. With this, I think I hand over the mic back to the organizers and with a big thanks that you have invited me for this webinar to share the information, to share the insight, I think, with the students which require the most. Because as a student of chartered accountancy, which everyone has at one point of time, even I was a student like you all, this is the best time where we can understand the things. Also remember कि जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चंस काफी लोगों के दिमाग में आ रहे होते हैं, बट काफी लोग नहीं पूछते उनको. So if you're asking a question, you are not helping just yourself, but you are helping others also. So please, I would ask the students to always ask questions and remove your doubts. Because अगर आप डाउट रिमूव कर रहे हो अपना, तो अपना ही भला कर रहे हो और साथियों का भी भला कर रहे हो उसके साथ. With these words, I am again very thankful to Sakshi ji to have invited me for this webinar, and I am always available for the students and for the members of the profession to share my information and knowledge with them always. Thank you very much. Really very grateful to have you here with us, and thank you for sparing your precious time with us and during these peak hours. So this is this was a very fruitful session, I suppose. So students really liked it. Over to you. And I can say to Sakshi ji that in future also, if any other webinar and any other topic of students is there, so you can always command me, I would say, to organize and have a webinar. I'll be most willing to do that for the benefit. अभी webinar तो institute की तरफ से end हो गया. After 1st of August, we are not allowed to take any webinar. So we'll definitely be inviting you in any seminar, sir. Of course. Sure. But I think webinar अच्छे हैं because from your comfort of your office, you can, I as a speaker can speak, and yes. But the institute wants कि seminars के अंदर आपका और interaction होता है actually, है ना? So it is not just the topic which you learn over there, but different type of interactions are there of the students with different students. That is why I think the webinars have been stopped by the institute. Maybe, sir. Thank you. Over to you, Ujjwal. Thank you so much, sir, for your valuable time. I think most of us must have resolved their queries regarding
the ITR and particularly the shares, mutual funds and other capital gains. I request Ajay Jain sir to propose the vote of thanks. Over to you, sir. थैंक यू एमओसी। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज की वेबिनार के हमारे अपने ओजस्वी वक्ता सीए दीपेन मोहन जी का, जिन्होंने अपनी हमारी आज की वेबिनार पर बड़े सरल और सीधे शब्दों में बच्चों को समझाया। ये लोग आपके ज्ञान से प्रभावित हुए होंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को इजीली सॉल्व करेंगे। मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, दीपेन मोहन जी इतने सरल और सौम्य हैं कि कोई भी परेशानी हमारे पास आती है तो बड़ी सरलता से उसको समझा देते हैं। ये उनकी सौम्यता है और नॉलेज को बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आगरा ब्रांच के समस्त स्टाफ का, अन्य सहयोगियों का, जिन्होंने इस वेबिनार को फ्रूटफुल बनाया और सक्सेसफुल बनाया, और सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इसमें लाइव इंटरेक्शन किया और अपनी जिज्ञासाएं शांत। धन्यवाद। Thank you, sir, for your words. Now I thank everyone for their gracious presence, and I hope that all of us will continue to meet in the seminars and webinars in the coming time. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Sir, please end the meeting. और उज्जवल भाई, We are live on YouTube, Yash bhai. Anup sir, please आप मीटिंग एंड कर दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, मीटिंग है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू।